Friends of class 12th, today's this topic of magnetic moment. It is a very small topic. Last time we calculated the magnetic moment for an electric dipole, but now it is turned for magnetic dipole. Okay, magnetic moment of a magnetic dipole. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमारे पास में दो चार्जेस थे, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नेगेटिव चार्ज. दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया, एंड वी मल्टीप्लाइड देम एंड वी गेट द व्हाट? Electrostatic dipole moment or electric dipole moment. In the same way, I will be calculating the magnetic dipole moment of two things. One is a bar magnet and second is the current carrying loop. Okay, a simple wire in which current is flowing. Now, first the bar magnet. This is the diagram of bar magnet. This is north pole over here and the south pole over here. Okay, first thing that the north pole and south pole of a bar magnet are not at the edges. नॉर्थ और साउथ पोल बिल्कुल किनारे पे नहीं होते, किनारे से थोड़ा सा अंदर होते हैं. ठीक है, such as north pole is not over here, south pole is not at this point but at this point. Similarly, north pole is not at the surface but a somewhat inside. Clear? If you think that they are same, they are not the same. Now the thing is, what is magnetic length? Magnetic length will be the distance between the actual north pole and actual south pole. How do we calculate this actual magnetic length? See, if the physical length means the length that is measured by a scale. If you measure from this point to this point, if the length of magnet is 5 centimeters, then the distance between north pole and south pole will be 4 centimeters. If you measure that the distance between one corner and another corner of a bar magnet is 10 centimeters, then the actual distance between north pole and south pole will be only 8 centimeters. So what is the formula? The formula is that magnetic length, I will write it in broad letters, magnetic length of a bar magnet is 4/5 of its physical length. ठीक है, physical length you can measure by the scale, multiplied with 4/5, and that will be the distance between north pole and south pole. Okay, next thing, how to calculate the dipole moment? Suppose the strength of north pole is Qm and the strength of south pole is Qm. Clear? Both of them will have the same pole strength because they both belong to the same magnet. जितना powerful north pole होगा उतना ही powerful south pole भी होगा. Okay, action and reaction are always equal and opposite. North pole we represent as plus Qm, south pole we represent as minus Qm. So what will be the dipole moment? It is any one of the pole strength multiplied by the length, the distance between north pole and south pole. Clear? So multiply these two things, pole strength into the magnetic length. That is what? That is the magnetic dipole moment. And now the direction. See, logically we are connecting. What is direction of electric field? What is direction of electric field? It is from positive to negative. But what is direction of electric dipole moment? It is from negative to positive. Similarly, the direction of magnetic field is from north to south. But the direction of the magnetic dipole moment will be from south to north. So how do you measure this 2L? Start from south and then go to north. This length will be 2L. So magnetic dipole moment is 2 into Qm into L. L is from south to north. So magnetic dipole moment is also from south to north. This is the first thing. Second thing, do you know that current carrying wire is a magnet? Okay, its magnetic field is very weak. But if you टर्न इट इन ए लूप, हम अगर एक कॉपर वायर लें, उसमें से करंट फ्लो करवाएं और उसका एक लूप बना दें, गोल या चौकोर या किसी भी शेप का, तो वो भी क्या होता है, वो भी अपने आप में एक मैग्नेट बन जाता है. उसका मैग्नेटिज्म थोड़ा सा स्ट्रांग होता है क्योंकि उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट स्ट्रांग होगा. ऑलराइट, ठीक है. अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई क्या कोई ऐसा मैग्नेट होता है जिसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होते? इज देयर अ मैग्नेट विदाउट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल? यस. यू हैव हर्ड अबाउट सोलेनॉइड. ठीक है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अपन ने कैलकुलेट की थी, ऐसे ऐसे होता है, वन एंड बी इज नॉर्थ एंड अदर इज एट साउथ. बट इफ यू टेक इट टॉरॉइड, टॉरॉइड में ऐसे था डोनट शेप में और उसके हमने वायर ऐसे लपेटे थे गोल गोल. ठीक है, सो दिस टॉरॉइड
if you try to locate, then every loop has a north pole and south pole, north pole, south pole, north, south, north, south, north, south, north, south. But there is no net north pole of this. There is no net south pole of this. So one example is toroidal solenoid. Other thing, if there is a current carrying wire I, do you know that there are magnetic fields surrounding it? Yes, there are magnetic fields, field lines around it. There is no net north pole or no south pole for this current carrying wire. So second example क्या है? कोई भी current carrying wire होता है, ठीक है, उसके आसपास magnetic field line जरूर होती है ना, magnetic field होती है, magnet भी होता है, imaginary magnet, लेकिन उसके poles कहाँ होते हैं? कहीं नहीं होते. Okay, so these two examples are examples of magnet without poles, right? But when you join the pole, इसी copper wire को, इसी iron को अगर हम ऐसे जोड़ दें, end to end जोड़ दें, okay, and if you see that the current is flowing clockwise, ठीक है, एक तरफ से clockwise, उल्टी तरफ से जाओ, if you go on the other side, the current appears to be like this, anti-clockwise. Clear? Just see. For you, what is this motion? For you, it is anti-clockwise motion, but from me, it is clockwise motion. Now, what is this? For you, it is clockwise motion, but for me, it is anti-clockwise. तो कोई भी circular motion एक तरफ से clockwise दिखता है, दूसरी तरफ से कैसा दिखेगा? Anti-clockwise दिखेगा. Okay. So when you see, you're not able to see, but if you, अगर आप देख पाते current को, तो current आपको इस तरह से दिखाई देता. Okay. So this would be the south pole. And if the current appears like this, आपके सामने से देखने पे, if current appears to be moving in anti-clockwise direction, then it is the north pole. ठीक है, ये बड़ा आसान है याद रखना. See the arrows of S के दोनों किनारों पे एरो बना दो, they will match the arrows of the current. ऐसे ही यहाँ पे N के दोनों किनारों पे arrows बना दो, they will be matching with the arrows of the electric current. Clear? So if current is clockwise, it is north pole. If current is anti-clockwise, it is if current is clockwise, it is south pole, and if current is anti-clockwise, it is north pole. ठीक है, अब इसमें से कई बार एक क्वेश्चन आता है that electric charges, they can exist independent of each other, right? Can I have a single positive charge at some place? Yes, I can have. Can I have a single negative charge at a place? Yes, I can have. That means electric monopoles, mono यानी एक, ठीक है, electric monopoles are possible, but मैग्नेटिक मोनोपोल इज नॉट पॉसिबल. मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, अगर मैं बोलूं कि इफ आई वांट टू हैव ओनली द नॉर्थ पोल विदाउट द साउथ पोल, सी एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं. इफ आई वांट टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड आई डोंट वांट नेगेटिव चार्ज, कैन आई थ्रो इट अवे? यस, नेगेटिव चार्ज को फेंक के दूर ले गया, आई हैव ओनली पॉजिटिव चार्ज. इज दिस पॉसिबल फिर मैग्नेटिज्म? इफ आई वांट टू हैव ओनली नॉर्थ पोल है ना, आई वांट टू थ्रो अवे द साउथ पोल, ऐसा हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इफ यू ब्रेक दिस मैग्नेट, ठीक है, अगर आप इस मैग्नेट को तोड़ दो, बार मैग्नेट को, कि बोलो भाई मैंने इसको ऐसा तोड़ दिया एंड आई विल हैव ओनली नॉर्थ पोल, ऐसा नहीं होगा. ठीक है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल फिर से इसमें डेवलप हो जाएंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, फिर आप बोलो कि भाई नहीं मुझे सिर्फ साउथ पोल ही चाहिए, मैं नॉर्थ पोल को यहां से काट देता हूं. ठीक है, तो मैग्नेट आपका छोटा हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर दोनों पोल्स रहेंगे, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल. ठीक है, सो इन बार मैग्नेट इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव ए मैग्नेटिक मोनोपोल. सिमिलरली इन this thing, current loop, okay, is it possible to separate north and south? No, it is not possible, क्योंकि कोई भी मोशन एक तरफ से अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज ही होगा. There is no circular motion which is clockwise from both the sides. There is no circular motion which is anti-clockwise from both the sides. That is why magnetic monopole is not possible. ठीक है, ये तो हो गई अलग बात. अब आते हैं वापस से magnetic dipole moment पर. The magnetic dipole moment of this current loop, how it is given? Very simple. If this is the current loop of radius r and current I is flowing to it, then magnetic moment is given as I into A. I into A. What is I? Current flowing in the wire. And what is A? A is the area of this loop. ठीक है, अभी ये सर्कुलर एरिया है तो आप यहां पे लिख सकते हो I into what is the area of the circle? Pi r square. ठीक है, but if instead of one turn, अब बोलो नहीं मैं एक ही कॉपर वायर है बार बार लपेटता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n times, I have wounded the copper wire n times, then the magnetic dipole moment will become n into I into A. This is it. ठीक है, अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा? See, in this the current is flowing like this. करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, कैसे फ्लो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज. तो इसका मतलब ये जो सामने पोल दिख रहा है, which is this pole, this is the
नॉर्थ पोल, दिस इज दी नॉर्थ पोल। अब इसके पीछे क्या होगा, पीछे कौन सा पोल आएगा, पीछे साउथ पोल आएगा। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसे होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ का है पीछे, नॉर्थ का है आगे, सो इट विल बी आउटवर्ड्स। Similarly, if I have a magnetic loop like this and the current is like this, करंट ऐसे फ्लो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो रहा है, ठीक है। सो दैट मींस जो आप सामने पोल देख रहे हो, दैट इज व्हाट, दैट इज द साउथ पोल। नॉर्थ पोल का है, नॉर्थ पोल भाई पीछे वाला नॉर्थ पोल है, ओके। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। So the direction of magnetic dipole moment will also be from south to north, that will be, this is inside, okay. This is very simple method to calculate the dipole moment of a bar magnet and or of a current loop. Thank you.